I welcome you all to the Swiflearn. As you all know that this is Kanchan here, and today I will be taking your first session of very important topic, chapter we can say, that is circle. भाई लोगो भी हमारा circle में ही है. So today we are going to learn about circles. ओके आज थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे. जितना हम 6th क्लास से पढ़ते आए हैं और जितना हम 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो सारे कंसेप्ट्स को आज हम कंपाइल अप करने वाले हैं. ओके So stay tuned till the last, and till then who all are online just drop me a message. Hello ma'am, कैसे हैं आप? तो बता देंगे भाई अच्छे हैं. मौसम थोड़ा सा थंडरिंग टाइप का हो रहा है तो बस ऐसा ही चल रहा है. Okay, so let's start. Before going to the chapter, let me introduce about your Swiflearn. भाई Swiflearn के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो प्लेटफॉर्म पता तो होना चाहिए कि what is all about. So Swiflearn is basically an online platform of India's which is most sincere also, and I can say that it is the most sincere learning destination for classes first. Clear? Now we try harder. Yes, in the Swiflearn we try harder. Me, my colleagues, with my teachers, and yes, our mentor team. Everyone is doing hard work so that exam से पहले कुछ भी important miss नहीं होना चाहिए भाई हमारे बच्चों के लिए. Clear है? Okay, so why it is sincere? Because it is providing 100% live and interactive classes. Now, whenever I'm talking about live, yeah, those are live. जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं ना, वीडियो कॉल करते हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, तो दैट्स लाइक कि वीडियो कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के जैसा ही स्विफ्टलर्न में हम आपको पढ़ाते हैं. और बिलीव मी, ऐसा लगता है ना बस टीचर सामने बैठ के पढ़ा रही है. एंड इंटरैक्टिव ऑल्सो. भाई डेफिनेटली जब इंटरेक्शन होगा, आप अपने डाउट्स क्लियर करना चाहेंगे तो आप पूछेंगे, तो जो भी आप पूछेंगे वो हम आपको क्लियर करने वाले हैं. सो आई कैन से दैट इज इंटरैक्टिव ऑल्सो. Okay, after that we have a personalized attention batch with maximum students. Yes, 6 students होते हैं, not more than that. भाई chaos नहीं चाहिए क्लास में, शांति चाहिए, और उस शांति के लिए भी मेक श्योर दैट 6 से ज्यादा बच्चे ना हो. क्लियर? और ये नहीं होना चाहिए कि मैम हमारी टर्न नहीं आई, मैम हमारी टर्न नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. So that we have only 6 students in per batch, and according to your convenience you can take a batch of 1:1 and 1:2. Okay, after that a dedicated academic mentor team to track and work on the students' progress. Yes, very important point here. What is that? That is the progress. भाई आप कहीं भी पढ़ें, आप ऑनलाइन पढ़ें, आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ें, आप ट्यूशंस में पढ़ें, आप स्कूल में पढ़ें, what is the most important thing? The most important thing is progress. So we track you there जहां पे आप लैक करते हैं. मैं हमेशा कहती हूँ the most important feature of the Swiflearn is that we track you there where you are lacking. Okay, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में you are not good at, so we will focus on that. ऐसा नहीं होगा कि भाई भीड़ में आपको भी वही पढ़ा रहे हैं जो सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं. जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है वहीं पे आपको टारगेट किया जाएगा. So that is the most important feature of Swiflearn. Okay, so after that we cover syllabus as per the school exam schedule and also handle custom request. So what is that? Basically when we talk about the syllabus, so it is CBSE, ICSE and state board. 3 boards are there. So हर तरीके के बोर्ड का सिलेबस यहाँ पे आपके स्कूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराया जाता है. एंड वी हैंडल कस्टम रिक्वेस्ट. सपोज यू वांट टू डू अ पर्टिकुलर चैप्टर इन द बैच, आपने कहा मैम बैच में अभी सर्कल्स नहीं है, मैम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा दो. Definitely that is also possible because this is the platform which is designed according to your requirement. तो आपकी जो भी requirement होगी उस पे हम भाई खरे उतरेंगे, अगर हिंदी में बोलूँ तो. Okay, so let's see some more key features. The thing is we detailed you progress report, that is very detailed progress report. तो भाई डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए हमें पीटीएम भी कंडक्ट कराना पड़ेगा. सो यस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्विफ्टलर्न इज दैट यहाँ पे ऑनलाइन पीटीएम्स भी कंडक्ट कराई जाती हैं, जहाँ पे आपकी ग्रोथ, ये देख रहे हैं चार्ट के थ्रू, तो आपके अप एंड डाउन्स, वेयर यू आर गुड एट एंड वेयर यू आर नॉट गुड, आप कहाँ पर बहुत अच्छे और कहाँ पर आपको प्रोग्रेस की जरूरत है, कहाँ पे आपको यू नो हम कह सकते हैं कि फोकस की जरूरत है, वो हम आपको बताने वाले हैं और आपके पेरेंट्स के साथ में. ओके, आफ्टर दैट यू कैन टेक अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट. भाई प्रैक्टिस टेस्ट तो अनलिमिटेड होने वाले हैं, मींस दैट yes, those who are online, जितने ऑनलाइन है, just tell me. Okay, नीतू वर्मा, good evening मैम. दिव्या गुप्ता, hi मैम, this is Anisha this side. Okay,
Hello Divya. Okay, hello Anisha. Hello Neetu. Hi Adya. Adya, I know Neetu and Divya, Neetu and Anisha are new. Say it's a warm welcome to Swiflearn. Okay, so I was talking about, okay, and just let me know that how is the preparation going on of your pre-board exams and also for the board exams. Okay, so you can take unlimited practice test. भी बहुत सारे practice test होने वाले हैं जहाँ पर आप करते करते थक जाएंगे, बट हम पेपर देते देते नहीं थकेंगे आपको. Okay, so भाई सिंपल सी बात है, बहुत सारे practice test होने वाले हैं. And what about the subjective test? Yes, we all know that subjective tests are very very important. इंपॉर्टेंट होते हैं ना, सबसे ज्यादा मार्क्स ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ही स्कोर करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे इस तरीके के टेस्ट भी अनलिमिटेड है, सो दैट आपके एग्जाम्स के टाइम में जो आपकी प्रिपरेशन है ना वो 100% होने वाली है. क्लियर? मैम जस्ट 10th स्टार्टेड. ओके, नाइस 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 नाइस. सो आज तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अनीशा फॉर यू, बिकॉज आज हम बहुत बेसिक सर्कल्स का करने वाले हैं और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सो स्टे ट्यून टिल लास्ट. ओके, आफ्टर दिस स्विफ्टलेर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज, यस दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ऑल ओवर इंडिया लेवल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, अगर आपको उसकी टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी स्विफ्टलेर्न में अवेलेबल है. तो इतना कुछ है स्विफ्टलेर्न में, तो एक ट्रायल बुक कर लीजिए. ओके, सो यू कैन बुक अ ट्रायल. ओके, सो ट्रायल में आपको पता चल जाएगा कि भाई मैम ने ये जो इतना बड़बड़ किया है ना स्टार्टिंग से, वो सब ट्रू है. ओके, सो those who are new here, you can book a trial with Swiflearn. For that, you can go to the description box, or what you can do, you can go just to the Google, just type www.swiflearn.com there, and you will be in our platform. Okay, subscribe to our channel. Yes Anisha, yes Neetu, who all are new here, make sure that subscribe कर लीजिए, so that आपको भाई पढ़ाएं हम और आप पढ़ें, तो ऐसा चाहते हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए. Press the bell icon. Yes, that is very much important. You need to press the bell icon so that कोई अपडेट मिस नहीं होना चाहिए. एज वी वर डूइंग द सीरीज, हम 10th क्लास की सीरीज कर रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स ऑल आर हियर. शशांक सर इज देयर, मनीषा मैम इज देयर, हिमांशु सर इज देयर, जो भी 10th के सेशंस दे रहे हैं. तो आप इन सबके सेशंस देख सकते हैं. ओके, ऑनलाइन भी, और अगर ऑनलाइन नहीं आपको मिल रहा है तो जो स्ट्रीम ओवर हो चुके हैं आप उनको भी देख सकते हैं. ओके, hit the like button if you really like this session. Comment, yes, comment कर दीजिए. अगर कोई suggestions है, कोई queries है, just do a comment. And yes, share it to everyone, to your family members, not family members, if your relatives who are in 10th class or who are in 6th to 10th class, so they can also get benefit from this YouTube class. Okay, तो आ गया भाई topic circles, the very important and very easy chapter, I can say the circle is. Okay, so basically what is circle? भाई एक circle बना दो, एक गोला बना दो. Everything is circle around us. Can you, who all are online, just give me an example of circle in your daily life, please. Plate और ऐसी चीजें मत बोलिएगा. Just think a little bit, higher. ठीक है, ये नहीं बोलना है कि चपाती सर्कल होती है और पिज्जा सर्कल होता है. ठीक है, just think a little bit higher and just tell me that in your daily life, give me a best example of circle. जो आप सबसे best हो, just give me an example of that. Till then, let me show you what are going to be the objectives. क्या होने वाले हैं. So today we will be introducing the circles. ठीक है, इंट्रोडक्शंस करने वाले हैं हम सर्कल का. एंड यस, वी विल बी डूइंग द टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स. सर्कल से कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड होते हैं. क्लियर है? क्लियर है जी. तो चलो आगे बढ़ते हैं. यू मे हैव कम अक्रॉस मेनी ऑब्जेक्ट्स इन डेली लाइफ व्हिच आर राउंड इन शेप. यस, राउंड होते हैं. सो वी कैन से दैट दिस इज अ पिज्जा हियर, एंड वी कैन से दैट दिस इज अ फुटबॉल हियर. बट फुटबॉल इज बेसिकली, or baseball or basketball, you can say anything. We can say that this is not the, this is three-dimensional figure. So this is a shape is circle, but moreover we can say this is a sphere. As I told you in the volume and surface area chapter में मैंने आपको बताया था कि what is sphere basically. Okay, so in a clock, you bangles. Okay, Divya, Anisha is saying bangles. Okay, little bit more. आप सर्कल्स को और कहाँ देख सकते हैं. हाउस होल्ड से थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा इंटरनेशनल वे में सोचिए. ठीक है, इन अ क्लॉक यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट सेकंड हैंड्स गो राउंड द डायल ऑफ द क्लॉक रैपिडली एंड इट्स टिप मूव अराउंड अ राउंड पाथ. सबको पता है
Yeah, second shape is a circle. Yeah, that is a circle. Shape is circle, but when we talk about the three dimensional, it is called sphere. Okay? तो अभी आप हायर क्लास में ना 10th क्लास में, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फुटबॉल और बास्केटबॉल जो होती है वो सर्कल शेप की होती है. ओके, ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे. दिस इज अ स्फेयर, बट स्फेयर को अगर हम 2D 2 डायमेंशन में बनाएंगे दैट विल बी अ सर्कल. Okay, Anisha? Okay. So this path traced by the tip of the second. Can you see this? ये देखिए कितनी जल्दी 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 ये जा रहा है. ये देखो 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 देखो. So this is also rounding like this. तो ये भी क्या बना रहा है? इसका जो path है, we can say, इसका जो path है वो भी क्या है? एक circle है. Path क्या है? Circle है. Clear? तो हम क्या कह सकते हैं? ये आपके real life examples है. A piece of lemon, the tire, the points. Okay, so when we will define a circle, what will be that? A circle is a shape with all the points at same distance from its center. So suppose, let's take me a center. Let's take me a center और I'm taking the all the points. अगर मैं ये सारे points को यहाँ पे इस तरीके से बना दूँ, ये देखिए सारे equal होने चाहिए. And when I will join these points, अगर मैं इन points को ऐसे करके एक join करके एक ऐसे करके एक figure बना दूँ, तो that will become a circle. Clear? That will become a circle. Here it is. Here it is. Okay, so this is a circle. And if you can say, कहा जा रहा है कि एक सेंटर पॉइंट से, तो हम कह सकते हैं कि एक सेंटर पॉइंट है. तो सेंटर पॉइंट से इसकी आउटलाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा. सबका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा. सो दिस इज अ सर्कल. ओके, दिस इज अ सर्कल. पढ़ते आए हैं, 5th 4th क्लास से पढ़ते आए हैं व्हाट इज सर्कल. ओके, और सर्कल इज अ राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर और एजेस. बड़ा मजा आता था जब 7th क्लास में और 6th क्लास में आता था ना कि सर्कल के एजेस और कॉर्नर्स लिखो, जब हम क्यूब और क्यूबॉइड के लिखते थे, राइट, लिखते थे ना, तो बड़ा मजा आता था भाई. सबको याद रहता था कि सर्कल का तो 0 कॉर्नर है और 0 एजेस है. ठीक है, सो वी कैन से दैट सर्कल इज बेसिकली अ शेप विद ऑल द पॉइंट्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, और वी कैन से दैट इट इज अ राउंड शेप फिगर दैट हैज नो कॉर्नर एंड नो एजेस. है ही नहीं कोई कॉर्नर. Yes, Kumkum Pant, good evening. How are you, Kumkum? So, we have so many terms and point on the circles. Do you know any of them? Yes, अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल का दिमाग में सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? सर्कल से क्या रिलेटेड टर्म्स हो सकते हैं? आपसे पूछ लेती हूँ मैं. चलो आज हम थोड़ी सी इंटरैक्टिव क्लास कर लेते हैं जिसके बारे में मैं बात करती हूँ. आज मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कि जब हम सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं तो क्या चीजें हमारे माइंड में आती हैं. क्या पढ़ा है आपने आज तक सर्कल से रिलेटेड? जल्दी से. Kumkum is there, Anisha is there, or Neetu is there, and who all are there? Just drop me a message. Hello, ma'am. Who are new here actually? So I want to ask from you that whenever there is a circle, अगर आप कॉपी में सर्कल बना होता है तो सबसे पहले सेक्टर. ओके, सेक्टर, वेरी गुड. ठीक है. And how are you? I'm fine. I'm very good. Segment, chord, radius. Okay, very nice, very nice. Radius. Okay, so all are true. So we can say that the very first is center. तो एक circle बना लेते हैं. Let me draw a circle. So whenever I'm talk about its center, जब मैं इसके center की बात करूंगी तो this will become the center. Okay, this will become the center. After that, diameter. Yes, after that, diameter. What the diameter will be? Diameter will be a line which will go through the center and join the circumference. जो उसका outer layer है उसको अगर मैं center के through एक line draw कर दूं तो क्या बन जाएगा? वो diameter बन जाएगा. Clear है? So I can say that O is the center, and if I write A here and if I write B here, so O will become the center and AB will become the diameter. Okay, any clear? तो वही बहुत इजी सी बात है. मैम आप ये इतना क्यों डिटेल में पढ़ा रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है. नए टॉपिक में पहुंचने से पहले हमें पुराना सब कुछ आना चाहिए. दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. क्लियर? सेकेंड, सेक्टर, एक एक करके बताती हूँ. रेडियस, सर्कमफ्रेंस, आर्क एंड सेमीसर्कल. ओके, क्लियर? सो व्हेन आई टॉक अबाउट रेडियस, तो जो डायमीटर का आधा होता है ना वो रेडियस बन जाता है.
दिस इज बिकम रेडियस. सपोज मैं अगर यहाँ पे r बात करूं तो रेडियस क्या आ गया, OR इज द रेडियस, एंड रेडियस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ अ सर्कल. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रेडियस ही होता है. जब तक आपको रेडियस नहीं पता होगा आप सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते. तो दैट बिकम्स द रेडियस. ठीक है, रेडियस कहीं पे भी जा सकता है, बस सेंटर से बाहर आना है, सेंटर से बाहर आना है, ये सारे रेडियस हो जाएंगे. सब रेडियस है. ये P लिख लो, इसको Q लिख लो, इसको S लिख लो, तो ये सारे हैं OR, OP, OQ, OS, दे ऑल आर सेंटर. ओके, क्लियर है. तो चलिए, when we talk about circumference, आर्क, सेमी सर्कल, सेकंड एंड सेक्टर में आपको आगे पर डिटेल में बताऊंगी. मैं आपको यहाँ पे सर्कमफ्रेंस बता रही हूँ. तो when I talk about the circumference, can you see this, right? So when I will go from A and I will go like this, and I will reach to the A, this point will set to be the circumference. तो circumference सर्कल में, क्योंकि सर्कल में पढ़ रहे हैं इसलिए circumference बोलते हैं, और वैसे हम दूसरों को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर. भाई एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई और वापस उसी पॉइंट पे आ गई. दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर. सो इट इज सेम इन द सर्कल. So if I will start with this point, and if I go like this and this and this, and I will again reach to this point, this will become the circumference. But I'm talking about on the edge. On the edge, if I go like this and I will reach the starting point, that will become the circumference. Clear? क्लियर है जी, सर्कमफ्रेंस क्या होता है. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट आर्क. ठीक है, तो आर्क का हम कैसे पढ़ेंगे, आर्क में आपको अभी आगे बताती हूँ डिटेल्ड में. नाउ व्हाट अबाउट सेमी सर्कल. सो व्हेन आई वर्ड सेमी सर्कल, सो इट इज हाफ ऑफ दिस. भाई सर्कल का अगर मैं हाफ एरिया ले लूं वो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल. सो द रेड शेडेड पोर्शन इज हियर सेमी सर्कल. क्लियर, इट इज सेमी सर्कल. क्लियर है, बहुत सिंपल से शब्दों में. सेकेंड सेक्टर हम आगे देखते हैं. नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज the center in a circle from which all the distances of the point on the circle are equal. This is called the center. It means that a point from which we made a circle. जब आप कैसे ड्रॉ करते हैं आप सर्कल, आपको रेडियस पता रहता है, आप जस्ट you just measure that radius in your scale and just put a rounder like this and go. So what is that? That you are pathing, you are tracing the path. Okay, so we can say that this is how we can draw a circle. Now if I talk about radius, so this is the radius of the circle, is the distance from the center to any point on the outside. Clear hai? As you can say that this is radius. Okay, now when I talk about diameter, so this become the diameter. Okay, this become the diameter and there is a center. So just always remember that in between there is center. Diameter की जो line होती है वो center से जाती है. Clear? And we can say that diameter is twice the size of the radius. Okay, so the circumference is the distance around the circle. Yes, distance around the circle. ये है. अगर मैं यहाँ से start करूँ, if I'm starting, मैं आपको already बता चुकी हूँ, यहाँ से start करूँ, if I'll go like this and this, so this will become the circumference. Okay, now second, the line that intersects circle in two distinct points is called a secant. Clear? A line, एक लाइन की बात हो रही है. अगर एक लाइन इस तरीके से सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो दैट्स बिकम द सेकंड. ये भी सेकंड हो सकती है, ये भी सेकंड हो सकती है, ये भी सेकंड हो सकती है. सारी लाइन सेकंड होने वाली है जो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है. क्लियर? तो अब मुझे बता दीजिए. ओके, सेकंड सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Secant is a line that intersect a circle in two distinct points. किसी भी तरीके से सेकंड हो सकती है, ऐसे भी सेकंड हो सकता है, ये भी एक सेकंड हो जाएगी, इसमें से भी सेकंड हो सकता है. Yes, condition. What is the condition? The condition is that should intersect a circle in two distinct points. Clear? Two distinct points. Clear? After that, do you have any idea about arc of a circle? Very important. इस में बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है. दैट इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल. सो कैन यू सी, मैंने क्या किया, रेडियस से जो सेंटर था दो रेडियस ड्रॉ कर दिए. क्लियर? अब जो दो रेडियस ड्रॉ करे हैं ये ए बी क्या बन गया, एक आर्क बन गया. ए बी क्या बन गया, आर्क. सो व्हाट वी कैन से दैट आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस. व्हाट इज? Yeah, there is a difference between a chord and a secant. Yes,
कॉर्ड एंड सेकेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. सेकेंट वी कैन से दैट सेकेंट इज अ होल लाइन which touches the circle in two distinct points. Chord is basically in between the circle. जब हम circle को part पे करते हैं तो वो chord हो जाता है. Clear? As you can see here, if I draw this, so this will be the chord. ये chord हो जाएगा. ठीक है, ये chord हो जाएगा. But when I talk about the second, so second will be a whole line which will intersect. वो उसको intersect करेगी. तो लाइन और लाइन है और एक सर्कल है, तो अगर उन दोनों को हम पास में लाएंगे तो वो इंटरसेक्ट करेगी. क्लियर है? वो that will become a क्या? That will become a second. ठीक है, जब हम कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड तो हम क्या कह सकते हैं, कॉर्ड तो बेसिकली एक पार्ट है सर्कल का जो हम कंसीडर कर रहे हैं. ये हमने एक सर्कल का पार्ट कंसीडर कर लिया. क्लियर? इज इट क्लियर? यस. सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द आर्क, तो आई एम सेइंग दैट कि आपने सेंटर से क्या किया. इज इट क्लियर अनीशा? इज इट क्लियर? ओके. When I talk about the center, सेंटर से मैं A यहाँ पे गई और सेंटर से मैं यहाँ पे गई, मैंने एक इसका पार्ट बना दिया. तो ये जो A और B जो आ रहा है, ये A और B है, ये क्या है? एक आर्क है. तो आर्क कहाँ पर आएगा? आर्क आएगा सर्कमफ्रेंस. तो आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस. क्लियर? अब देखिए, आर्क भी दो टाइप की है ना. एक तो ये A और B है, तो यहां से भी A B है. अब अगर मैं A में B वाया C जाऊं, वाया C पता है ना सबको, वाया C मतलब C के थ्रू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाया C? वाया C मतलब C के थ्रू. सो इफ आई एम गोइंग A वाया C, तो दिस विल बिकम आल्सो आर्क. ये भी तो एक आर्क बन जाएगी, बनेगी ना. बट दिस विल बिकम द माइनर आर्क एंड दिस विल बिकम अ मेजर आर्क. A part of the curve along the perimeter of a circle is called an arc, or we can say that it is a portion of the circumference. So this has become the minor arc. ये छोटा है ना, छोटा है, तो this will become the minor. और अगर मैं A to B via C जाऊं, तो this has become the major. So we can say that there are basically two types of arc. One is minor and one is major. नाम ही पता चल रहा है, minor मतलब छोटा वाला, major मतलब बड़ा वाला. Clear? Is it clear to everyone? Okay. Now there are two arcs that can be created from any 2 points that lie on the boundary of the circle. The number one is major and the number two is minor. Okay. So minor, the shorter arc, very simple, the shorter arc, and major, the longer arc. Figure से ही clear है कि longer और shorter जो होंगे वो major और minor होंगे. This is true. ठीक है. अब लिखने का तरीका देखिए, very important. जब हम arc लिख रहे हैं, minor arc लिख रहे हैं, तो AB, just put a arc over it. And when I'm writing the measure, तो A C B, it's going via C, so we can say that it is a. तो आर्क का जो मेजर साइन होता है वो ऐसा होता है. आपको जो दो अल्फाबेट्स लिखने हैं या जिसके थ्रू वो आर्क जा रहा है वो आपको लिखना है, एंड जस्ट पुट अ आर्क ओवर इट. ठीक है, आर्क लगा दीजिए. दैट विल बिकम द सिंबल ऑफ. नाउ कम्स टू द सेक्टर. द सेक्टर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क विद द सेंटर. बहुत सिंपल सी बात है. अगर मैं एक सर्कल की बात करूं और एक सर्कल में मैं एक आर्क की बात करूं, तो ये जो आर्क है, इस आर्क को अगर मैंने, ये माइनर आर्क है, इस आर्क को अगर मैंने ऊपर ज्वाइन कर दिया सेंटर से, दिस विल बिकम अ सेक्टर. ठीक, सेक्टर हो जाएगा. सेक्टर से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई एक सिटी होती है, एक सिटी में एक सपोज पर्टिकुलर सिटी है, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं या कोई भी सिटी आप XYZ किसी भी, तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं ना, अलग अलग पार्ट होते हैं. हम बोलते हैं कि ये 31 वाला एरिया है, ये 30 वाला एरिया है, ये 41 वाला एरिया होता है ना, अलग अलग नाम होते हैं. तो जब एक पूरी जगह है उसका अगर हम एक पार्ट ले लें तो दैट विल बिकम अ सिटी. तो ये हम बहुत सुनते हैं, जो हायर सिटीज होती हैं, जैसे गुड़गांव में सेक्टर 30 है, सेक्टर 31 है. तो व्हाट इज अ सेक्टर? बेसिकली सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द होल सर्कल. और जब हम बर्थडे केक काटते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, बर्थडे केक काटते हैं, कैसे काटते हैं बर्थडे केक? एक केक है, ठीक है, सर्कुलर केक है. आजकल सर्कुलर केक्स बड़े फैशन में है. यस, फैशन में है सर्कुलर केक्स. यस. तो व्हेन आई सपोज हम क्या करते हैं, दिखाते बड़ा वो जो विजुअल है बड़ा प्योरली दिखाते हैं कि ऐसे कट गया. कटता तो नहीं है घर पे जब केक काटो ऐसा. तो वो जो आप केक काटते हैं ना फर्स्ट बाइट के लिए, दैट इज बेसिकली अ सेक्टर. That is basically a sector. Clear? So basically sector is formed by joining two ends points of an arc with a center. Or we can say that whenever I will draw two radius, मैं कहीं भी two radius draw कर दूंगी. मैंने एक रेडियस ये ड्रॉ किया और एक रेडियस ये ड्रॉ किया, तो उन दो रेडियस के बीच का जो एरिया होगा
that will become the sector. किसी भी सेंस से आप सेक्टर को ले सकते हैं, या तो आप आर्क के सेंस से ले लीजिए या आप दो रेडियस लाइन के सेंस से ले लीजिए. So this is a part of the circle or we call it sector. यहाँ पे सेंटर पे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्लियर? सो अब सेक्टर भी 2 हो जाएंगे. बहुत सिंपल सी बात है. सेक्टर भी 2 हो जाएंगे. वन विल बी माइनर एंड वन विल बी मेजर. वन विल बी माइनर एंड वन विल बी मेजर. ओके, सो जो माइनर है, जो छोटी आर्क वाला है, भाई जो माइनर आर्क वाला है वो क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर हो जाएगा. और जो मेजर आर्क वाला है वो मेजर सेक्टर हो जाएगा. क्लियर? बहुत सिंपल है. सो वी कैन से दैट द माइनर आर्क corresponding to the minor sector and the major arc correspond to the major sector. Yes, got it. Very good, Anisha. Yes. Good evening, Tanuja. How are you? I'm fine, Tanuja. How are you? How are you? आप कैसे हैं? Okay, so let us visualize this. And how is the preparation going on? How is the preparation going on? The most important thing, ma'am daily पूछती है. Okay, so can we see it? Very nice visualization. Very nice. So देखिए, I'm just मैं बड़ा कर देती हूँ so that थोड़ा 5 कर देते हैं. Is it clear? So I'm just mentioning the center angle. Suppose the center angle was 30 degree. So can you see for the 30 degree what is the this is basically is the minor sector and this is basically the major sector. ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए अनीशा and तनुजा, आद्या, कुमकुम, those who all are online, if the angle for minor arc या minor sector is 30 degree, so what will be the angle for major sector? Fast, what will be the angle for major sector? बहुत सिंपल है, very simple. If I have a minor sector angle of 30 degree, so what will be my angle for the major sector? भाई क्लास टॉपिक इजी है लेकिन हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, है ना? ओके, एंड बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अभी टेंजेंट की थ्योरम आ जाएगी ना, बस सारे क्वेश्चन उस टेंजेंट की थ्योरम से आते हैं. अभी हम वो टेंजेंट की थ्योरम पढ़ने वाले हैं इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, 360 minus 30, yes, very good. So that will be 330. As we all know that the complete angle is 330 degree. Okay, is it clear? Yes, very good, Anisha, very good. So now can I change it to the 90 degree? Yes. Oh, 90 degree. It has become the, yes, Tanuja, right answer. This has become a quarter. Quarter बन गया. Quarter बन गया ना? होता है ना quarter? 1/4. Okay, now let's see it around 180. Okay, so this has become a semicircle. This has become a semicircle. And from here, I want to tell you a very important theorem जो मुझे अभी याद आई है. अगर मैंने एक, आप पढ़ के आए 9th क्लास में, वैसे मुझे पता है, तो those who are very new, जल्दी से मुझे बता दीजिए ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? ये सेमी सर्कल बन गया. दिस इज अ सेमी सर्कल. नो, 360 minus 90. Yeah, that's true. That will be 360 minus 90. Yeah, true. But I'm asking about now. Oh, sorry. I'm asking that if I draw a triangle in a semicircle, which vertex? One vertex, two vertex will be in the diameter and third vertex will be on the circumference. So what will be this angle? Do you know? What will be this angle? What will be this angle? क्या होने वाला है ये एंगल? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. लास्ट ईयर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए 9th क्लास में इसके. इनफैक्ट प्रूफ भी था इसका, तो बहुत अच्छा प्रूफ था. यस, एंड आई होप आप लोगों के मेन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आया होगा. या, वेरी गुड. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 degree. ओके, यस. सो those who will give the most answers ना, आज लास्ट में उनका नाम shout out होने वाला है and I'm going to write those name in the screen. Okay, and only one name. Okay, I can write two also. Okay, I can write. So is it clear कि किस तरीके से जब हम सेंट्रल एंगल को बढ़ा रहे हैं तो किस तरीके से तो मेजर आर्क और माइनर आर्क आर चेंजिंग? Clear? Okay, so I think it is very much clear from here. Now semicircle, as we all know that what is semicircle? The half of the circle is called the semicircle.
Okay, so a semicircle is a half of a circle formed by cutting a whole circle along the line segment passing through the center of the circle. Now tell me what will be the line जो सेंटर से गुजरती है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए, तब तक मैं आगे पहुंचती हूँ. द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर, क्या कहलाते हैं, जो दोनों एंड पॉइंट्स को क्लियर करती है, दोनों एंड पॉइंट्स पे पहुंचती है. क्वार्टर. यस दिव्या, क्लियर बेटा, यू ओके ओके, थैंक यू सो मच, क्लियर है, वेरी गुड. Okay, great. So quarter of a circle formed by splitting a circle into 4 equal parts or a semicircle into 2 equal parts. Very simple. Semicircle को जब हम 2 equal parts में कर देंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, और जब हम 4 equal parts में कर देंगे तो यहाँ पे कितना, यहाँ 90, 90, 90 और 90. Okay, and this will be 90 and 90. So is it clear? Yeah, diameter. Very good. Diameter. Yeah, diameter is the true. Okay. Now there are 2 more points in a circle. The one is chord and the one is tangent. So do you know what is a chord and a tangent? So chord of a circle, a line segment that join 2 points present on a curve is called known as a chord. So basically this is also the difference between, Anisha, you are asking me. So we can say that basically chord is a line segment. And when we talk about the secant, this is a line. सेकेंड की जब हम बात करते हैं ना बच्चा, तो सेकेंड एक लाइन होती है इस तरीके से, तो एंड पॉइंट्स नहीं है उसके, बट कॉर्ड हैज 2 एंड पॉइंट्स. दिस इज आल्सो अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ सेकेंड. ओके, so we can say what we can say about a chord. So we can say a chord is a line segment that join 2 points. दिख रहे हैं ना भाई, 2 distinct points. This has become the chord. Okay, this has become the chord. So a chord is often used to describe a line segment joining 2 endpoints that lie in a circle. 2 endpoints that lie on a circle. Okay, clear है chord के बारे में? Clear? Now, tangent of a circle. You might have seen a pulley fitted over a well which is used to taking out water from the, ये देखा है आपने पुले, इस तरीके से होता है ये, जो पुराने जमाने में अभी भी कई जगह जब wells होते हैं तो we just pull out. So here the rope of the side of the pulley, if considered as a ray, अगर हम उसको एक ray की बात करें तो it is like a tangent to the circle representing the pulley, है ना. अगर मैं एक ये बना दूं, एक ऐसा बना दूं, क्लियर, और इसमें मैं एक बात करूं कि I am having ऐसे रोप है, तो ये रोप इसको कहाँ टच कर रही है, सिर्फ इसको एंड पॉइंट पे टच कर रही है, तो we can call that this kind of a ray, this kind of line which touches the circle at the outer layer में टच करी, अंदर नहीं आ रही है, that will become a tangent. So can we draw this? Yes, let us try. Okay, suppose I'm having this circle and if I want to draw a tangent, तो tangent को मैं कैसे draw करूंगी, ऐसे. देखिए tangent को अगर मैं ऐसे draw करूंगी तो this will become a secant. तो secant तो हमें बनाना नहीं है, हमें तो tangent बनाना है. So for the tangent there will be only one point of intersection. यहाँ पे बहुत important point आपको याद रखना है कि that there is only one point of intersection. So if there will be 2 points of intersection, that will become a secant. वो secant बन जाएगा. So there is only one point of intersection. Clear? So a line in a plane of a circle that intersect the circle at exactly one point, that is called the tangent. So a line in a point of a circle that intersect the circle at exactly one point, and one point पे कैसे करेगी, देखो अभी मेरे पास ये रे है, ठीक है. Okay, and let me select it. Okay, now look here very carefully. अगर मैं इसको यहाँ लेकर जाऊं तो ये एक पॉइंट पे कर रही है, ध्यान से देखिए. अगर मैं इसको सर्कल के अंदर जहां थोड़ा सा भी लेकर आई, 2 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, सब जगह 2 पॉइंट्स है. पर जैसे ही मैं दूसरी तरफ इसको सर्कल के आउटसाइड ले गई, दिस इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट. सो वी कैन से दैट tangent is the line which intersect at only one point. If it will intersect at the 2 point, that will become a secant. Clear? So this is basically the major difference between a tangent and a secant. So for to be this line, ये लाइन कहीं भी है स्पेस में, कहीं भी ले लो इस लाइन को, अगर मुझे इस लाइन को क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है, तो मुझे इसको एंड पे लाना पड़ेगा. क्लियर? और अगर मैं इसको थोड़ा सा भी अंदर ले आई तो सेकंड बन जाएगा. सो रिमेंबर दिस थिंग, ये टेंजेंट को याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट
बात है। और टेंजेंट को आप टी से भी याद रख सकते हैं, टी ना, तो ये देखो ये लाइन को कहाँ पे टच कर रहा है, इस लाइन को रेडियस ले लो और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो, तो ये टेंजेंट, टेंजेंट में टी में अपने आप ही, टेंजेंट में अपने आप ही टी है, और टी में अपने आप ही है कि अगर मैं इसमें सर्कल ड्रॉ कर दूं तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है, दिस इज टेंजेंट। यस, सो दिस इज शॉर्टकट टू रिमेंबर दैट व्हाट इज टेंजेंट। टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर, ओके। सो सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। जो सर्कल है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। द नंबर 1 इट इज इनसाइड, द नंबर 2 आउटसाइड एंड नंबर 2 ऑन द सर्कल। भाई बहुत सिंपल सी बात है, कुछ कमरे के अंदर, कुछ कमरे के बाहर और कुछ दरवाजे पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं कि सम पॉइंट्स आर आउटसाइड, some are interior and some are on the circle. So the point inside the circle, which is also called the interior of the circle. When I talk about the interior, so these all points will be the interior. Clear है? And if I talk about the exterior, so exterior will be, मैं अगर यहाँ पे भी कोई point बना देती हूँ तो that will become exterior. Yeah? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत ही नहीं है। When I talk about on the circle, so those will be on the circumference. ठीक है, वो कहाँ पर आने वाले हैं? Yeah, circumference, boundary. Yes, so we can say that point lying on the circle is known as point on the circle. ठीक है, on the circle. Yes, clear? So let us visualize how angle is formed by chord and tangent. ये आपके पास theorem है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. Okay, so let me show you how we are going to do this. अभी देखो, अभी ध्यान से देखो, ये एक टेंजेंट है और एक ये कॉर्ड है। Can you see this? This is a tangent and this is a chord. Okay, let me show you. This is a tangent. अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो एक टेंजेंट बन जाएगी। And this is a chord. ये एक कॉर्ड है। Okay. Now, let me slide this. देखते हैं क्या होता है। Okay, let me slide this. देखिए, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे इतने स्टेप में क्या हुआ? इतने स्टेप में हुआ कि जो सेंटर था, सेंटर से हमने 2 रेडियस ड्रॉ कर लिए। ये सेंटर है, सेंटर से हमने 2 रेडियस ज्वाइन कर लिए जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स में जाके मिलते हैं। क्लियर? एक बहुत अच्छी थ्योरम है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, बहुत अच्छी थ्योरम है, बट आज सिर्फ मैं आपको विजुअलाइजेशन दिखा रही हूँ कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है जी? तो देखो अभी क्या हुआ, टेंजेंट का एक टेंजेंट जितना था उतना आया, यहाँ पे सेट हो गया, और जो दूसरा टेंजेंट था वो भी आया और यहाँ पे सेट हो गया। Clear? So what we can say here? We can say here that if this angle is x, okay, just don't get confused again. I have made x like this. Kanchan Mam x ऐसे बनाती है, ये याद रख लीजिए आप. Okay? So please don't mind. Okay. So if this angle is x, so it is coming 2 times, 1 time x and 1 time x. So what we can say here? We can say here the angle between the tangent and the chord is half of the angle which chord is making at the center. Not at the center, but that will be, अभी देखो सेंटर तो ये वाला बन रहा है ना, बट उसका जो बैकवर्ड वाला एंगल है। क्लियर? दिस इज बेसिकली अ थ्योरम जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि जो टेंजेंट एंड कॉर्ड जो एंगल यहाँ पे x बना रही है वो यहाँ पे इस वाले सेट पे आकर डबल x हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है जी? ओके, सो कैन वी डू दैट अगेन? देख लेते हैं एक और बार, we have time. So let me slide this. This has become okay. One more. So we can say that x has become double x. Okay. Now let us discuss few more things. Now you are going to tell me the center of a circle lies in interior or exterior. Yes, those who all are online, my lovely kids who all are online, just jaldi se answer bata dijiye. We are ending the chapter because this was very easy. Tomorrow we are going to have a very important theorem which will be based on the tangent. Okay, so just tell me the center of a circle lies in interior or exterior? Yes, center कहाँ पर आएगा बच्चों? Theorem is little confusing. Okay. Anisha, not a problem at all, because the theorem, we use this theorem. Actually, there is no proof of this theorem in the class 10, but in the next session, I will definitely make it sure. Okay, not a problem at all. We are going to use this theorem. बस use है इस theorem का. समझ जाइए आपके कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो यहाँ पर आके डबल हो जाता है. How we are going to do these questions, that I will tell you in the next session. Okay, not a problem.
कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब हम विजुअलाइज के थ्रू जब हम क्वेश्चंस में करते हैं तो बेटर समझ में आती है. इट हैपेंस विद द मैथ्स बेसिकली. इंटीरियर इज द करेक्ट आंसर. द पॉइंट greater than its radius lies. Very good. That is also in the longest chord of the circle is the longest chord of a circle. Both true. Interior, exterior, both true. Okay. Now the longest chord of a circle, very important and very easy also. Longest chord. Okay, let me show you how the longest chord will be. Diameter. Very good, Anisha. Very good. Anisha, how was your 9th exams? Actually, I want to ask. How was your exam? How was your exam for the 9th class? Yeah, diameter. Very good. Very good. And those who have a little confusion over there, let me show you. Suppose this is a circle and this is a chord. Okay, this is a chord suppose. तो अगर मैं इस chord को क्या करूंगी? अगर मैं इस chord को मूव करूंगी तो ये longest कहाँ पर आएगी? Longest, ये देखो ये छोटी chord है. Okay, let me show you. ये छोटी chord है. One more chord is there. One more chord is there. One more chord is there. तो automatically हमें दिख रहा है कि सबसे बीच में जो लाइन है that is the center. सेंटर में जो लाइन आ रही है वो उसको क्या कहते हैं? हम डायमीटर कहते हैं. तो आपको विजुअल के थ्रू भी पता चल गया कि किस तरीके से होता है. यस, that was pretty good. Okay, so very nice, Anisha. Okay, आ गया. An arc is dash when it ends are the end of a diameter. तो क्या होता है जल्दी बता दीजिए. आर्क इज अ डैश. वो डैश क्या कहते हैं हम उस आर्क को जब उस आर्क के जो दो एंड्स होते हैं वो डायमीटर बन जाते हैं. तो डायमीटर किसका होगा? सर्कल का होगा. चलो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, उसका एक डायमीटर बना लेते हैं. Okay, Tanuja, you are also in 9th standard. Okay, so you are in 9th standard or okay, Tanuja. Okay, so you are now in 10th class, like that. Yes, Tanuja, you are now in 10th class or now in 9th class. In the next session, which is starting from the April. Because this kind of things I really need to know. Semicircle, yes. अरे भाई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आए हैं आज तो कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है. सो जिनको नहीं पता चल रहा है मैं बता देती हूँ कि अगर यहाँ इसके दो एंड्स हैं, अगर इसके दो एंड्स हैं तो आर्क ये बन रहा है बच्चों, ये आर्क बन रहा है तो ये आर्क क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल. ओके ओके ओके. So in the next, okay, great, Tanuja, great. So still you are answering all the questions. I'm very happy. So do you like maths? Okay, it's Anisha and Tanuja. Do you like maths? तभी आप maths की class में हैं. So what is your favorite subject? Chord 2. Okay, that's great. So now segment of a circle is a region between an arc, yes, and a chord. Very good. The segment of a circle. The circle divides the plane on which it lies in. A circle divides the plane on which it lies in the three parts. Okay, that's great. So this was it for the today. We have done the introduction and we have done the term related to circle. Today we have not done so much, but yes, this was generally a thing that कि how we are going to start a new chapter. देखो क्या होता है जब भी हम नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना तो हम वार्म अप करते हैं ना, तो ये थोड़ा लंबा वार्म अप था. बट टुमारो वी विल बी डूइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ टेंजेंट. Okay, so a big thank you. Okay, thank you so much, Anisha. Thank you so much. It was a pleasure to have you in my class because you have really gave me so good answers. And so today's shout out is Anisha. It is Anisha, right? And yes, Tanuja, you were also too good, bache. You were a little bit late. So your answers was less. But Anisha, you did it today. Okay. So hopefully we will next in the next session, which is tomorrow at same time, I can say. So those who have not, yes, your next session is on. Yes, my dear, next session is on and on. जब तक syllabus खत्म नहीं हो जाता on ही है सब कुछ. Okay, so subscribe to our channel. Those who have not subscribed it yet, press the bell icon. Okay, so that you will never miss any update. कल हम second session लाने वाले हैं जो टेंशन का बहुत important part है.
ओके और कल की थ्योरम पे तो ना भाई बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट बी देयर माय लवली किड्स सो दैट वी कैन हैव अगेन अ रॉकिंग क्लास. ठीक है, एंजॉइंग होनी चाहिए क्लास. आई थिंक मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होना है, एंजॉय करना है. सो बट दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर. एंजॉय करने के साथ साथ हम मैथ्स पढ़ने हैं एंड इट वाज अ ऑसम क्लास टुडे बिकॉज माय लवली स्टूडेंट्स वर देयर. So hit the like button really if you really like the class. सेशन अच्छा लगा आपको, कमेंट ये कर दिया करो कमेंट. ओके, सेशंस हैं, कमेंट कर दिया करो. आपके सजेशंस हैं, क्वेरीज हैं, आप कोई नेक्स्ट चैप्टर पर्टिकुलर पढ़ना चाहते हैं, सो बी देयर एंड यस शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन गेट टू नो दैट कि भाई ऑनलाइन चल रहा है यूट्यूब में सब कुछ. क्लियर? सो टिल टू द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर एंड यस बाय बाय माय लवली स्टूडेंट्स. एंड वही मैं अपनी टैगलाइन कहूंगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग विच विल मेक यू perfect in the maths because there is no shortcut in the maths.